Oakland. Okay, so hello and good afternoon. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu class analysis. Today, we'll start first of all, with the today's questions, as usually what we do, and then we will be starting with the today's Hindu analysis itself. And after that, we will see at the end of our this discussion the questions based on today's Hindu analysis. Fine, it will be your homework. Okay. So first question is easier questions. Consider the following statements regarding Nipah virus. It is a zoonotic disease. Number one statement. Second is currently there are no vaccines for this virus. Yesterday we discussed this virus, which which has been actually noticed again in Kerala. Fine. So therefore, around 2 to 4 people have already died or resulted in this due to this virus. So choose the correct option. So what exactly is the correct option? So number one is correct. Yesterday we discussed it is a zoonotic virus. Zoonotic means it spreads from animals to humans, and even it does spread from humans to humans as well. But somewhat zoonotic means from animals to humans. And currently there are no vaccines. Yes, perfectly fine. No vaccines available currently. So correct option choose karna tha means both are correct. Next question is the El Nino and other climate phenomena endangers the food security. We need to comment in 250 words for a 15-marker question. Yes, so yesterday we discussed on the text and context page of the Hindu an article related to climate phenomena and food security, and we discussed there that there is evidence that El Nino phase, which is going to be active soon. So this can of course endanger the food security or can impact the yields of the crop production. So there are many climatic phenomena, not just El Nino, but even ENSO, that is El Nino Southern Oscillation, a phenomena which actually is in the east, which actually occurs in the eastern and central tropical Pacific Ocean, especially because these are intensifying and likely to affect the southwest monsoon. Of course, the last month of this south going on, but at the same time, we also discussed about the IOD, that is, if there is a positive Indian Ocean dipole, fine, then of course the effect would be to somewhat neutralize, or this effect won't be that much, fine. So how to build upon this answer? So of course following the same IBC structure, I, B and C, that is intro, body and conclusion, and at times for conclusion we also say way forward, fine, that is suggestions, wherever we can the points. So how to start? So in introduction, you can say that there has been a series of disruptive weather and climate phenomena in India this year specifically, demonstrating the complexity of our precipitation system. Apart from that, the widespread, from the destruction of infrastructure and loss of life due to landslides and all. So 15 number ka hai, to 4 to 5 lines of introduction, fine. So indeed, you can say that considering the impact of climate change and considering the issue of food security, so both goes hand in hand, and therefore the impact of climate change can be the climate change can also impact the this issue of food security, fine. So therefore we need to find balance. Now for the body part, you can of course you can start with this giving certain facts and figures, kind of we are recently experiencing a kind of climate change and related impacts. So especially in the Himalayan region, of course you have this Himachal Pradesh, Uttarakhand, fine. So apart from this, next point that we need to explain is of course the El Nino phase. What exactly is the El Nino? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. फिर इसी में आपने आईओडी का भी शो करना है कि हाउ पॉजिटिव आईओडी कैन न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ El Nino. Then after that, El Nino and food security, there can be one headings. Fine, we discussed this yesterday. कि agriculture जो है that depends on the two types of water. One is called green water, other is called blue water. So green water is what? Green water is of course that is rainfall, and thereby resultant moisture that generated of course at the level of soils. So and other is blue water. So blue water is the water in the ocean, rivers, all the water bodies, fine, canals and so.
So you need to mention these things under El Nino and food security, and there are even the facts and figures data point as well, that almost half of the Indian this 50%, almost half of the Indian agriculture is dependent or is rain fed. ठीक है, so काफी डिपेंडेंसी है, इसको भी ध्यान देना है. And apart from that, ground water का जो issue है, over exploitation or excess extraction, so another issue that need to take into account. Then El Nino and northeast monsoon, not southwest but northeast monsoon. इस point को भी explain करना है, we discussed yesterday. And then there are certain persistent uncertainties related to the global climate change that we need to factor in. Fine. And now ultimately the last point is way forward, that how we need to respond. Okay, so here you can give points wise, like 1, 2, 3, 4 as a solution. Then finally you can conclude. So that would be the complete structure of your answer, that how we need to respond. You can come up with the various points from this paragraph itself, and several adaptation and mitigation, like crop diversification, shifting towards millets, shifting towards those products, productions or the cereals and all which needs less water. Fine, not the water guzzlers. And based on decades of experience, it is clear that alternative short-term and long-term management of our dams and reservoirs is required to reduce the risk of dam-based flood disasters as well. At the end, how we respond as a society and in terms of governance, this is how we can conclude. This answer on this with these lines, that how we respond as a society and in terms of governance to the water and climate change crisis, which links to indeed food security, water and ecological security, through diversifying our agro-food system, a lower dependence on the blue water, rejuvenating our rivers, and sustainable water sharing between humans and nature will to a great extent determine well-being of our 1.4 billion. Right. So that completes the structure of the answer. Right. So that's it from yesterday's questions. So let us start with the today's newspaper itself. Okay. Then we'll see papers. Okay. So here comes your first page, or the front page of the Hindu. Nipah cases rises to 5 in Kerala. So 5 casualties we have we came across till now. So 789 contacts kept under watch. 789. So it's a huge, a big number. 3 security personnel killed in Kashmir from right side. The deadliest and strongest earthquakes. 2001 Bhuj. Okay, this is a data point. And then that's the politics. Need to go into that. Cabinet passes a resolution lauding Prime Minister for G20 meet. Of course, this was anticipated, much anticipated in advance. Right? Of course, I mean, this has been a milestone. We have very, successfully concluded our G20, this summit this year with this Delhi declaration as well, which was difficult to come up with, but still we managed to get this one. So of course, a grand success. Okay. Okay, a special session of parliament beginning from 18th of September up to 22nd of September. So it is 18 से 22 तक ये चलने वाला है. एंड यहाँ पे क्या मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे वो उसका थोड़ा बहुत आइडिया सरकार ने दे दिया है. दैट इज विल टेक अप बिल्स ऑन सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द प्रेस. ठीक है, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उसमें हमने कमेटी देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें सीजीआई भी होंगे, बट अब जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया बिल, उसमें सीजीआई को रिप्लेस करके वहां पे किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, स्पेशली होम मिनिस्टर को हो सकता है कि वहां पे रखा जाए. ठीक है, तो इस वजह से इस बिल को पास कराना एक गवर्नमेंट के एजेंडे पे है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर सो ये बिल का नाम क्या है? यू कैन सी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स appointment, condition of service and term of office bill. ठीक है, which will regulate the appointment, conditions of service and term of office of the election commissioner and chief election commissioner. Apart from this, the two houses will begin discussion on parliament's 75-year journey on the first day. ठीक है, and apart from this, that is parliamentary journey of 75 years starting from same Samvidhan Sabha, okay, Constituent Assembly actually. ठीक है. Apart from this, there is another bill which will be taken up in this special session. That is almost 3 bills to be taken up in the Rajya Sabha. That is Post Office Bill 2023 to consolidate and amend the law relating to the post offices in India. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि these are the bills which are going to be taken up. Even press related bill as well.
this upcoming special session of the parliament. Okay. कर्नाटका टू अपील अगेंस्ट वाटर रिलीज. कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में जो मुद्दा है वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे. ठीक है कि वहाँ वाटर रिलीज, वाटर क्राइसिस जो चल. तो वी डू नॉट रिकग्नाइज बफर जोन्स इन मणिपुर सेज मेती विमेंस ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं कि बफर जोन्स वी डू नॉट रिकग्नाइज सच बफर जोन्स हैं स्पेशली they do not recognize the legitimacy of. Okay, so legitimacy के ऊपर question है of buffer zones in the state created by the union and the Manipur government separating the Kukis of population in the hills from the Meiti community. तो बफर जोन क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मेती कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे कुकीज जो रहती है. तो यहाँ पे अगर इमीडिएटली दोनों में डिस्टेंस काफ़ी कम है तो यहाँ पे बीच में बफर जोन क्रिएट कर दिया जाता है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों की बढ़ा दो सो दैट कि फ्रीक्वेंटली जो है इस तरह की हम कन्फ्लिक्ट्स या वायलेंस जो इमर्ज हो रही है वो कम हो सके. ठीक है, सो बफर जोन जैसे में आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेज भी बफर जोन क्रिएट करते थे. ठीक है, मेन फॉर प्रोटेक्शन है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस okay, so this is a city page from Delhi, not that much, not that important. States page in fact, and you see politics only here, and comply with rules on capture release of stray dogs, order High Court. Okay, so before this summit we have seen that many of these stray dogs were actually captured. Of course things happened related to this, even की viral भी कुछ चीजें हुई थी, memes भी बने, but somewhat हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया जाए, जरूरी भी है. एंड ओके, एडवांस ड्रिंक. ओके, पॉलिटिक्स हियर ओनली. ओके, सो ओवर 2.2 crore people register for reading of the preamble in Karnataka tomorrow. We the people of India. Okay, so this is something going to be remarkable one find for Karnataka of course. तो याद रखना कि कहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे इतने लोग, especially for reading preamble. Preamble हमारे indeed very very important from the point of view. That's why you need to be aware of these facts. Okay, again states politics only. Can skip this. Okay, grilling and all that important. Okay, study ecological dynamics of Nipah virus. ये कहा है experts ने to the government. इकोलॉजिकल डायनेमिक्स क्या है इमर्ज होने के निपा वायरस की, इसकी स्टडी किया जाए. ठीक है, ये करने की ज़रूरत है. जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसमें देखेंगे फिर. So here we have, there are 4-5 articles today which is very important, so we'll try to discuss course. So here is a mockery of pedagogic ethics and the breaking of a bond. Exactly is this a mockery of pedagogic ethics? What does it mean? So story क्या है? Story ये है कि मुजफ्फरपुर in fact, yes, this place is called मुजफ्फरनगर. Okay, not Pur, मुजफ्फर is in Uttar Pradesh. Yes, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ कि there is a story where the teacher asked her students to slap another student. ठीक है, and that student incidentally is a Muslim boy. ठीक है, so why I am underlining this fact, because this can also result in communal kind of violence. ठीक है, हिंदू मुस्लिम ऑल. तो इस तरह से so हुआ क्या कि यहाँ पे एक मैडम है, वहाँ उन्होंने ये कहा एक बच्चे को कि दूसरे को थप्पड़ लगाओ, एंड जिसको थप्पड़ लगाया गया वो लड़का जो था वो मुस्लिम था. ठीक है, so इस पे ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि it is somewhat making the mockery of pedagogic ethics. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो बैकग्राउंड इन्होंने दी वो इस तरह की है भी, which is making the mockery. What happened? The teacher runs her own private school in a village of Uttar Pradesh. Like thousands of other schools like hers, it is recognized by the government. For now, it has been closed down because the incident caused a stir and perhaps some embarrassment for the government as well. ठीक है, so this is what happened. 7-year-old student to slap him one by one. ठीक है,
a teacher who asked the classmates of her 7-year-old student to slap him by one. Okay, this is what he has labeled as mockery. So gaps in, अब ये हुआ क्यों? So he is raising the ethics of pedagogy, especially the teacher training. कि टीचर के पार्ट पे ये गड़बड़ी है कि टीचर को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। सो कहना नहीं चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स की बात आती है या टीचर ट्रेनिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं जो इशू है वो रियल में इंडिया में टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड है। एंड हाउ, तो सबसे पहले आरटीआई की बात करते हैं कि जब आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी हमें मोमेंटम, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, बट इस मोमेंटम को बनाए हुआ क्या कि over the time the RTI had laid down indicators of quality, and for a while an attempt was made in a few states to use RTI compliance criteria for both government and private schools. But COVID-19 was not the only factor responsible for the loss of momentum in taking the RTI seriously. Parallel fears of neglect surfaced in the crucial sector of teacher training. So the whole focus is on teacher training. Since the 1990s, हुआ क्या, teacher training has become beehive of the small entrepreneur, small time entrepreneur. The regulatory structure of the National Council for Teacher Education (NCTE) has not been able to enforce its meticulously worked out norms. ठीक है, so कहीं ना कहीं the author is, and he has been retired as a chairperson of NCERT, of course, former director of National Council, of course NCERT, and the author of Smaller Citizens. तो हुआ क्या कि एनसीटी के ऊपर ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, द सुप्रीम बॉडी विच टेक्स केयर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड एजुकेशन. इवन की इन 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द लेट जस्टिस जेएस वर्मा. तो दिस इज द फर्स्ट कमीशन. सेकंड कमीशन की बात करेंगे, दैट इज डीपी चट्टोपाध्याय कमीशन, को भी देखेंगे. जेएस वर्मा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की जेएस वर्मा कमीशन. किस लिए अपॉइंट की? टू एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर ट्रेनिंग में खामियां कहाँ हैं उसको देखा जाए, एंड सजेशन दी. His magnificent report submitted in 2012, 4 साल बाद, offered some hope that training of the teachers would gain status and attention, but that hope proved short-lived. उम्मीद लगाइए कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ. नॉर्मली होता भी है, काफी रिपोर्ट्स हमारी पड़ी हुई हैं. Improvement of quality by the inspection Raj proved an illusion. Last month, the Supreme Court again passed its verdict in a case concerned with the teacher training at the primary level. And the court said that the NCTE has not applied its mind while allowing bachelors of education (B.Ed) degree holders to teach at the primary level. B.Ed is generally meant for teaching at the secondary level, but NCTE ने allow कर दिया था कि जिसके पास B.Ed डिग्री है वो primary level पे भी पढ़ा सकते. ठीक है, so this is what court said in strong wordings, that this NCT has failed to apply its mind. Okay, so this Muzaffarnagar case already discussed. Now the other case. बट यहाँ पे बड़ी अच्छी एक भाईचारा देखने को मिली है सोसाइटी लेवल पे. क्या कि एक अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सम रिपोर्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स, रूरल लीडर्स, सम वेल नोन एज फार्मर्स लीडर्स हैव एडवाइज्ड द बॉयज पेरेंट्स टू अवॉइड परस्यूइंग द केस. जो मुस्लिम बॉय जिसको थप्पड़ लगाया दूसरे उसके क्लासमेट ने, तो उसके पेरेंट्स को ये कह रहे हैं, कुछ फार्मर लीडर्स हैं, कि अवॉइड करो केस रजिस्टर करने की, एफआईआर कराने की. क्यों? अदरवाइज दिस लीडर्स फेल, द एपिसोड विल विटिएट कम्युनल रिलेशंस. द डिस्ट्रिक्ट already has seen a riots few years ago. The teacher herself reportedly saw no reason to be contrite, as she's considered it her job to control children in order to tackle them. So टीचर को कोई इससे फर्क नहीं पड़ा, but anyhow it's a good, a very good thing that people have, farmer leaders have asked the boys' parents to not to pursue this case further, because this might result into giving a communal, communal this results into communal kind of conflicts, because Hindu Muslim वाला एंगल यहाँ पे दिया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है. that won't be good for society overall. So Chattopadhyay's effort. So another committee commission हमें देखने को मिलती है, and that is Teacher Commission. It is popularly known as Teacher Commission report. It was chaired by Dr. D.P. Chattopadhyay. Fine. And what happened? The report showed how far school teaching in India was from standards and ethics that one might regard as a professional. कि हमारे यहाँ कितनी खामियां हैं, कितने हम दूर हैं जो एक प्रोफेशनल एथिक्स या टीचिंग एथिक्स होनी चाहिए इंडिया में,
इन और जो हमारी स्टैंडर्ड्स और एथिक्स की स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए टीचिंग में, वो उससे हम काफ़ी दूर थे according to this commission. Many decades have passed since that report was submitted, so this is a second commission after this J.S. Verma committee. Hardly anyone reads it now. A summary of recommendation is available on the internet for the benefit of students facing an examination such as B.Ed. चलो, तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं किया गया. Now, the new ethos of education, and not just in UP, promotes easy instrumentality and never reflection or introspection. So we cannot expect the teacher who asks her student to slap the 7-year-old Muslim boy to reflect for a moment on her conduct. ठीक है, क्योंकि सिस्टम में ही खामियां हैं, कहीं ना कहीं एथिक्स नहीं है, टीचर ट्रेनिंग में ही इन चीज़ों को नहीं शामिल किया गया या इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं खामियां जो हो वो बड़े ही बेसिक लेवल पे है. The Chattopadhyay report had advocated a well-read, thoughtful teacher who is conscious of her decisions and actions. बड़ी अच्छी बात, आई मीन सजेशन तो रिपोर्ट्स की अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं उसको, बट हमारी ब्यूरोक्रेसी गवर्निंग ब्यूरोक्रेसी ने नहीं ठीक समझा इसको in implementing this in entirety, and it continued to regard the teacher as a minor functionary. During the 90s, the compulsions of a structural adjustment led to the loss of what little dignity teacher of a small had enjoyed. अब आप लोगों ने देखते हो कि स्कूलों में खासकर प्राइमरी बच्चों के लिए अभी स्टिक्स नहीं रखते, अदरवाइज पहले टीचर्स के पास होती थी, ठीक है, तो अब बच्चों को की पिटाई करना अलाउड नहीं है. North Indian states had no problem opting to recruit teachers en masse on contractual or ad hoc basis. ठीक है, सो पोस्ट 1990s हमें ये ट्रेंड देखने को मिला, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हुई लार्ज स्केल पे, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्थ इंडियन में हमें लार्ज स्केल एंड दैट टू ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल और एड हॉक बेसिस पे रिक्रूटमेंट देखने को मिली. एंड साथ में ही रेकलेस प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाई दैट मार्केट लॉज will take care of the remuneration of the teachers. Now market will go on the remuneration. So reckless privatization, enrollments grew, but there was no lasting improvement in working conditions. Under the influence of the global policy advisors James Tooley, low budget private schools multiplied. Fine. This is what happened actually. Now the shattering of a bond. तो एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में राइटर जो हैं, बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट. बट एक बड़ी मजेदार बात इसमें इन्होंने कहा कि देखो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एंड इवन स्टेट्समैन, उनके हम दिस बर्थ डेट को सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स डे, एंड दैट वाज ऑन 5th of September. बट अदर थिंग 14th नवंबर को हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं, है ना. तो ये दोनों में जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को एक दिन ही मनाया जाए. तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमने खुद ही इसको सेपरेट कर दिया, इस बॉन्ड को ऑलरेडी हमने खराब कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ फैंटेसी दैट डॉक्टर राधा कृष्णन वुड हैव नॉट एंटरटेन्ड सच काइंड ऑफ बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स स्पेशली. He taught in benign times when institutions of higher learning enjoyed a modicum of freedom, and teachers emerged from training colleges with a thought or two about how to look after children. Many still have that ability, and their heads will hang with exhaustion when they read about the Muzaffarnagar. So abhi bhi, I mean, this doesn't represent all of the teachers. There are many teachers who are ethical as well. तो ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट की वजह से सारी कंट्री में टीचर्स अनएथिकल है, ऐसा नहीं है. Now the administrative machinery in UP has shut down the school. The teacher, also the school head, made a mockery of pedagogic ethics. The child who suffered her wild imagination will suffer the imprint of his experience. By separately assigning a day for teachers and another one for children, we seem to have forgotten that the two form a bond. Of course, जैसे पेरेंट्स एंड बच्चे की एक बॉन्ड होती है, वैसे टीचर स्टूडेंट्स की भी बॉन्ड होती है, बट सेपरेट डे सेलिब्रेट करके कहीं ना कहीं हमने इस बॉन्ड को लाने की कोशिश की है. No worthwhile education can take place when the bond breaks. The Muzaffarnagar teacher is reportedly not even sorry that she had shattered the bond so wantonly. For her, the great advances of child psychology never took place, nor would she care if told that Rabindranath Tagore and Gijubhai Badheka, who created an Indian version of the Montessorian approach, had pleaded for adult kindness toward children. Treat children with the kindness.
especially at the level of teacher and adult teacher there should be yes, fine. Montessorian approach क्या है? Montessorian approach is related to actually imparting education to the children. ठीक है? So in the earlier 20th century, Maria Montessori actually gave this approach. Fine. So that's what actually the Indian version of this was given by Rabindranath Tagore and Gichubhai Padek. Okay, and they pleaded for adult kindness or the teacher's kindness towards children. Because children initially at the primary level they are in tender age, and there we need to actually depends to a greater extent how actually we are treating the children. That determines the later part of their life to a greater extent. Next is important one, the complex path to biofuel sustainability. तो यहाँ पे biofuel sustainability की बात कर रहे हैं. रिमेंबर कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेवोल्यूशन चल रही है कि हाँ जी अब ईवी के शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम आईसी क्या होता है एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन दैट इज बेसिकली पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड इंजन्स व्हीकल्स. ठीक है. बायोफ्यूल्स, तो बायोफ्यूल्स में एक नाम आपने सुना होगा इथेनॉल. इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी चल रही है इंडिया में बाय 10% and like 90% of petrol and 10% of ethanol. So ethanol blending program with petrol. Another thing is कि biofuels में भी different categories हैं. First generation biofuel, second generation biofuel. So she is saying in this article that somewhat first generation biofuel जो है वो sustainable नहीं है considering the food security, climate change and all everything. And जो second जो generation biofuels हैं they might they can be sustainable. So these are the things mentioned in this whole of the article. Fine. क्या positives हैं? We'll see to it. So one by one. So biofuel है क्या? हम ऐसा समझते हैं कि biofuel is something which is blanket, but this is not like that. Biofuel is a blanket term that includes both sustainable and unsustainable fuels, and an understanding of their difference will be essential to drive effective decarbonization एक्शन. ठीक है. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की, ग्लोबल वार्मिंग को हॉल्ट करने की बात करें, टेम्परेचर कम करने की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसी समझ भी हो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से ज़्यादा सस्टेनेबल है. तो दो तरीके की, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल एंड सेकेंड जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल विच इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स. द पॉलिसी टारगेट इन इंडिया ऑफ अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल E20 by 2025-26 is expected to be made almost entirely by 1G, that is first generation ethanol made from sugar cane and food grains. So आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन जब हम बायोफ्यूल की बात करते हैं तो these are made from the sugar cane and sugar baggies and all and food grains. सेकेंड जनरेशन की जब हम बात करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सेकेंड जनरेशन इज मेड फ्रॉम क्रॉप वेस्ट एंड रेजिड्यूज, unlikely to contribute much to achieving this target due to several challenges. तो जो टारगेट ये मीट करने वाले हैं हम वो फर्स्ट जनरेशन से करने वाले हैं, ना कि सेकंड जनरेशन से. मींस व्हाट? मींस फर्स्ट जनरेशन जनरली कंप्राइज्ड ऑफ योर शुगर केन एंड फूड ग्रेन से जो हम इथेनॉल बनाने वाले हैं. तो द ग्राउंड वाटर फर्स्ट जनरेशन के साथ इशू क्या है कि शुगर केन इज अ वाटर गजलर प्लांट. शुगर केन को 1 किलो शुगर प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, इवन के राइस से भी ज्यादा पानी. So that is something which is downside of this. So the groundwater depletion implication of growing sugarcane are well known, but the food security implication of groundwater depletion and of using food grains for ethanol production are harder to imagine because India is currently self-sufficient and produces surplus food. तो इसलिए कह रही हैं कि ये समझना ठीक है, समझ आते हैं कि फूड जो शुगर केन प्रोडक्शन है उसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो वी माइट ट्रेड दिस, बट हम अभी सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी माइट इग्नोर दिस पॉइंट ऑफ the food security implication of groundwater depletion. We might overstep this and of using food grains for ethanol production because we are the one producing surplus food this. Okay, but there are several reasons why diverting the surplus produce towards energy or specifically growing a crop of energy may not be a sustainable strategy. Now why? हम कहते हैं ना कि FCI के पास बहुत ज़्यादा अनाज है जो सड़ रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं, उनको लगा दो, उनको यूज़ करो आप एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. बट ये कह रही हैं कि नहीं, ऐसा इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं. क्या है, रीजंस क्या हैं कि डाइवर्टिंग द सरप्लस प्रोड्यूस टुवर्ड्स एनर्जी और स्पेसिफिकली ग्रोइंग अ क्रॉप फॉर एनर्जी में नॉट बी अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी इन द लॉन्ग टर्म. व्हाई? देयर आर रीजंस. फर्स्ट इज India's crop yields have already stagnated and global warming is expected to reduce yields, which means that the same area will produce less of total produce.
So our strategy to meet blending targets cannot depend on surplus crop production. This is the one thing. जरूरी नहीं है कि आज surplus production है तो कल भी surplus production ही होगी. Over the time yields जो है वो कम होती जा रही है because of climate change and all. So therefore this won't be a good strategy. Second reason, a recent study led by the University of Michigan projected that the rates of groundwater depletion could triple during 2040 to 81 time period compared with the current rate. So this is again attributable to temperature rise and the resultant increase in crop water requirements. This climate change. So with such limited resources, be it groundwater or arable land, food production should be prioritized over fuel. लोगों को खाने को तो दो, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे. Third reason, the agricultural sector is one of the hardest to abate in terms of direct greenhouse gas emissions. Methane बहुत ज़्यादा agriculture से produce होता है, होगा आप लोगों को. So increasing GHG, that is greenhouse gas emissions from this sector for motor fuel production in order to decrease GHG emissions from the transport sector, एक की जगह पे दूसरे से कम करना, is an unnecessary balancing loop that would achieve little net benefit. एक जगह से कट करके दूसरी जगह में से कम करने के लिए यहाँ पे बढ़ाना is something which is not logical. So in India, ethanol blending policy has been a good strategy to deal with the surplus sugar production. Another good strategy to deal with the surplus sugar production would be to reduce surplus sugarcane cultivation. तो एक स्ट्रेटेजी तो ठीक है इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के अंडर कि हम वी आर डीलिंग विद सरप्लस शुगर प्रोडक्शन जो है उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. बट अनदर गुड स्ट्रेटेजी ये होगी इंडिया के लिए कि सरप्लस शुगर प्रोडक्शन जो है उसको रिड्यूस करें एंड प्रोडक्शन वुड बी टू रिड्यूस सरप्लस शुगरकेन कल्टीवेशन की कल्टीवेशन को कम करो क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है इसके लिए. So increasing farmer income is often waved as a white flag in response to this argument. ये कह दिया जाता है कि इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, है ना, तो इसलिए इसको कम करना ठीक नहीं है, कल्टीवेशन कम करना ठीक नहीं है शुगरकेन की. So this is the argument which is actually advocated. But sugarcane being a remunerative crop has more to do with government intervention than anything else. Fair and remunerative prices, FRPs, डिक्लेयर करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स भी बहुत होती है शुगर केन के रिलेटेड अराउंड. So this means that any unassuming crop could be made as remunerative as sugarcane if so desired. Sustainable biofuels are produced from crop residues and other waste with low water and GHG footprint. ठीक है, so sustainable biofuels वो biofuels हैं जो produce होते हैं from crop residues and other waste with low water consumption and low ही जो कम है, that is even की greenhouse gases footprint. The Global Biofuel Alliance, which was recently announced or launched at the G20 summit concluded of course in New Delhi last week, is expected to strengthen the development of sustainable biofuels in addition to promoting ethanol uptake. कि ethanol को बढ़ाने के साथ साथ biofuels की sustainability जो है उसको promote की जाएगी under this alliance. We are expecting that. It is therefore a historic moment for India, demonstrating its commitment to climate action with a global cooperation. एक बात है यहाँ तक. Now sustainable biomass use. तो एक रिपोर्ट है that the report is the Energy Transition Commission (ETC) की रिपोर्ट है that is bioresources within a net zero emission economy. Recommended that biomass should be prioritized for use in sectors where there are limited low carbon alternatives. And long-haul aviation and road freight segments wherein complete electrification might take longer to achieve could make the cut. So in sectors में पहले long-haul aviation, long routes की plus road freight segments, इन दो जगहों पे हमें prioritize करना चाहिए to use more and more of biofuels. ठीक है, whereas petrol vehicles would probably not. ठीक है कि जहाँ पे petrol vehicles cannot replace this, वहाँ पे हमें कम से कम इस पे फोकस करना चाहिए पहले. According to the International Energy Agency (IEA), to achieve net zero emission by 2050 globally, sustainable biofuel production needs to triple by 2030 to fuel modes that have few other mitigation options. कि जहाँ पे mitigation limited है, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे कम से कम net zero emission को कम करनी है अगर 2050 तक, तो biofuel की जो production है that needs to be triple by the year 2030. और हम अभी 2050-2060 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, नो डाउट 10% टारगेट हमने टाइम से पहले अचीव कर लिया था. So of course we are moving on right direction. Although first generation ethanol is unlikely to fit the bill, the second generation ethanol could be counted as a sustainable fuel. ठीक है,
तो ध्यान रखना कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जो है would be counted as a sustainable fuel, especially if the production is decentralized, that is crop residues do not have to be transported large distances to central manufacturing plant. तो अगर प्रोडक्शन को हम प्रोसेस को हम अगर डिसेंट्रलाइज कर दें तो हमें सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बट दिस माइट अफेक्ट अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर द 2G प्लांट. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट कम स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे ये इशू हमें देखने को मिलता है. Now, balancing economies of scale with the energy needs and cost of biomass collection and transport across large distances is a major challenge. The Global Biofuel Alliance could help drive innovation and technology development in the establishing an efficient biomass supply chain and a smaller scale decentralized biofuel production units. So, achieving true sustainability is a complex, especially with respect to biofuels. Therefore, any strategy should be carefully examined in the context of larger ecosystem to avoid unintended negative consequences. कि कुछ भी करने से पहले हमें लार्ज स्टॉक टेक करने की जरूरत है, कि लार्ज स्केल थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है, सो दैट जो बायोफ्यूल्स पे हम फोकस कर रहे हैं दैट मस्ट बी फाइन. ओके, next is related to, again important one, related to we need to somewhat the need of R is to protect our flood plains. ठीक है, काफी टाइम से humanity is struggling with the shortage of water on one hand as well as an excess on the other hand. ठीक है, as the World Health Organization stated, WHO, floods are increasing in frequency and intensity. Frequencies in number पहले के मुकाबले अब ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्लडिंग अकर हो रही है. इन इंटेंसिटी की जो इंटेंस है ऑफ कोर्स उनकी कैपेसिटी टू ब्रेक हैवॉक और क्रिएट मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स वो भी बढ़ती जाती है. एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो is expected to continue to increase due to climate change. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2013 कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फ्लड्स इन उत्तराखंड, 2014 फ्लड्स इन कश्मीर वैली, 2015 फ्लड्स इन चेन्नई एंड 2017 फ्लड्स इन गुजरात. All cause loss of lives and livelihoods and massive damage to infrastructure. Apart from this, अभी हम करंट ईयर की भी बात कर रहे हैं, जैसे हिमाचल के बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा था. सो दिस ईयर टू वी सॉ द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ रेन इंड्यूस्ड फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. The Yamuna water level crossed the its highest mark, breaking a 45 years old record. ये सब हम देख चुके हैं न्यूज़ में. All these disasters point to the severity of the situation and the urgent need to tackle it. तो ठीक बात है कि ये सब severity को अंडरलाइन कर रही हैं और हमें अर्जेंट बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है, स्टेप्स लेने की जरूरत है. तो as per the Geological Survey of India (GSI), over 40 million hectares, which is nearly 12% of the total land area of India, is prone to flood. So ये डेटा आपको पता होना चाहिए. According to GSI, 12% of the total land area of India is flood prone. ठीक है. So the severity and frequency of floods has especially affected our cities, where there is a little efforts made in maintaining natural topography. वहाँ पे जो भी कोस्टल एरियाज हैं उसको रिक्लेम करने की कोशिश की जाती है. आप लोग देखते हो जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र है, कहीं भी सदर्न स्टेट्स में एज वेल. अब मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरने लग जाती हैं. यही सुनने को मिलता है कि 12 मंजिली या 10 मंजिली बिल्डिंग जो थी वो गिर गई. क्यों? क्योंकि उसका बेस ही ऐसा था. कोस्टल एरियाज में आपने बना रखा है तो ऑफकोर्स reclaiming of the floodplains areas is something which is must avoid at any cost. So cities expanded fast and mostly in a haphazard manner, which makes them vulnerable to disaster. Flooding affects the economy too. Indian cities are projected to contribute to 75% of the GDP by 2030. India primarily relies on the Disaster Management Act 2005 and the rules made in pursuance of the act to deal with the flood management, but this law is meant to deal with the multiple hazards or multi-hazard risks and is not specifically focusing on the flood risk management, जैसा कि जर्मनी में हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, we'll discuss the case of Germany and what we can learn from there. So Germany today is focusing on flood risk management actually. So as per the act, that is DMA, Disaster Management Act 2005, disasters cannot be predicted, and this is not entirely correct, especially with respect to the frequency and intensity of floods. Indeed, this can be predicted as per the author. Now change in strategy. So he is saying somewhat what we need is that we need to change the strategy. Fine, what we are following till now. So
Disaster risk across the world are found to be situated within disaster risks जो है across the world are situated within the environmental and natural governance resource governance. बिल्कुल ठीक बात है कि आपने नेचुरल जो एनवायरनमेंट है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप कैसे ओवर द टाइम आपने उसको गवर्न किया है, यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, ओवर एक्सप्लॉइट किया है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट डिटरमिन्स दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, राइट? दैट्स अ रिस्क. So there is shift in the strategy of flood control in countries such as Germany, UK and the Netherlands to flood risk management. So flood opposed to flood protection, कि flood protect करने के बजाय अब हम फ्लड की जो रिस्क है उसको मैनेज करने पे ध्यान देंगे. That's something remarkable done by these countries. हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है, करने की जरूरत है. Over the time we are doing improving, but of course we need to do a lot. While the protection strategy, क्या डिफरेंस है दोनों में, includes technical measures such as the laying of dikes actually embankments, temporary flood defense walls and polders. The key elements of the management strategy are retention of water and restoration of floodplains. ठीक है, under protection strategy. But in India, there are large-scale encroachments on floodplains. This increase the frequency of flood and damage caused by them. एक कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड दिस ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट है 2018 की रिपोर्ट. द रिपोर्ट सेज it attributed encroachments in the floodplains of the rivers of Tamil Nadu and the failure to act on them as the prime reasons for the Chennai floods of 2015. The auditor called the deluge a man-made disaster. ठीक है, शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, रिक्लेम करते जा रहे हैं लैंड को, कोस्टल एरियाज को, फ्लड प्लेन्स को, एंड इस वजह से इस डेवलपमेंट के जर्नी में इतना हम वो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वी सी द कॉन्सिक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सिवियर एंड इंटेंस फ्लड्स ऑक्यूपाइंग द फ्लड प्लेन. तो हो क्यों रहा है क्योंकि हम फ्लड प्लेन्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, स्पेशली उत्तराखंड के यहाँ पे एग्जांपल ऑथर कोट कर रहे हैं. Illegal construction work in the floodplains reduces the capacity of rivers to contain a high level of water within their banks. This is especially the case during heavy rainfall when water flows down from upper catchment areas. Thus, the tendency to occupy floodplains results in flooding. Okay? So, tendency to occupy more and more of floodplains, fine, results in flooding, जिसको कि हमें avoid करना चाहिए. Uttarakhand has been neglecting eco-sensitive floodplains by allowing the construction of guest houses and hotels on the river front to promote tourism and boost its economy. So one of the case study or example here is Uttarakhand. कैसे ये violate कर रहे हैं and how they are actually inviting such floods. So in the wake of massive floods in 2013 हमें देख चुके हैं क्या हुआ था. The NGT, the National Green Tribunal, virtually barred construction of 200 meters along the banks of the Ganga in 2015 directive, but attempts were made to bypass this as well. ठीक है, these are the cases. and इसके लिए एक बिल लेके आ गया एक्ट, that is Uttaranchal River Valley Act 2005 is meant to regulate mining and construction in the river valley, but reports indicate that there is CAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग rampant mining and construction activity with little regard for the environment. इसी वजह से उत्तराखंड हिमाचल में भी इवन की हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे. and most of the time you find the single reason, that is development, and that is somewhat lopsided development, right? Properly planned all reclaiming of the such coastal areas. So floods do not merely show the fury of nature, they are also often brought about by climate change induced rainfall. This especially impacts mountainous regions such as Himalayas. हाँ, शॉर्ट स्पेल में बहुत हेवी रेनफॉल हो जाती है, कहीं पे देखते हो आप. and therefore results in जैसे 2013 का भी जो इंसिडेंट हम देखा था केदारनाथ त्रासदी एंड ऑल, वहाँ भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. So laws in India which are meant to protect the environment are not implemented. बिल्कुल ठीक बात है. While there are central policy measures to protect floodplains, they are mostly non-binding on states. ठीक है कि पॉलिसीज तो हैं बट या तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है या नॉन बाइंडिंग है. सो मर्जी के मालिक अगर हैं तो फिर कहाँ ही काम, वॉलंटरली अगर कुछ करना है तो कहाँ ही हम करते हैं. So no state in India has been able to prevent encroachments on flood plains. सिर्फ कोई उत्तराखंड या हिमाचल की बात नहीं है, सबकी यही बात है. जो भी कोस्टल एरियाज हैं, स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स हैं,
So preserve ecosystem. There are many experiences around the world which point to potential benefits of protecting and preserving ecosystems such as wetlands, forest lakes and coastal areas. So what are the examples across the world जिनको जहां से हम ये सीख सकते हैं कि प्रिजर्व करने से फायदे क्या हैं. Okay, so in 1996, Germany made a fundamental change to its Federal Water Act in the aftermath of massive flood. The law provides for protecting original retention capacity while reconstructing bodies of water. कि ओरिजिनल जितना पानी रह सकता है उसको तो रखो ही रखो, साथ में also reconstruct the bodies of water. कि अगर over the time कुछ छिड़खानी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है पॉलिसी मेजर्स के थ्रू, तो ऑफ कोर्स ठीक किया जाए. Therefore, floodplain restoration and water retention of water bodies are considered to be pillars against flooding. ये चीज हम भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं जर्मनी से. That is through things floodplain को restore करो और water retention of capacity जो है that water body की उसको भी consider किया जाए, बढ़ाया जाए. So climate change adaptation is a cross sectoral issue. ठीक बात है कि across the sectors हमें काम करना पड़ेगा मिलके. It involves laws relating to land use, preservation of water bodies, coastal regulations and environmental impact assessment. ठीक है, so multiple fronts पे हमें काम करना पड़ेगा. Thus it is a complex. A multitude of laws need to be integrated into a coherent framework. Okay, so that's not that easy, but somewhat हमें इन चीजों से बचने के लिए करना ही पड़ेगा. The purpose will not be served if, for instance, a law to tackle climate change is passed by the parliament while changes to land use and the preservation of water bodies are not made. ठीक है, सो इस तरह से हमें हर चीज को इंटीग्रेट करके देखना होगा और चलना होगा. However, achieving this requires a strong political will. ठीक बात है, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक तो दिक्कत ही है. बट पॉपुलिस्ट लीडर्स टेंड टू रिफ्रेन फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसीज. ठीक है, क्योंकि ग्रीन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में काफी सारी डेवलपमेंट के लेवल पे सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, पॉलिटिकली नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं. So this must change if we want to save lives and livelihoods and safeguard infrastructure. Okay? But अगर वोट से ज़्यादा important कुछ है तो lives and livelihoods हैं, and of course the safeguarding of the well. So therefore we need to move ahead by taking or lessons from or learning from across the world, best practices. Next is analyzing the global stocktake report. ठीक है, so global stocktake report, United Nations. Okay, so the ahead of just concluded G20 summit that saw several world leaders converge in New Delhi, the United Nations Climate Secretariat made public synthesis report on the results of 3 meetings held so far to discuss progress achieved by countries in achieving the goals of Paris Climate Agreement of 2015. यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट सेक्रेटरीट है उसने इस रिपोर्ट को रिलीज की है, एंड दिस रिपोर्ट इज नोन एज ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, कि जो 2015 से अभी तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 17 की फाइंडिंग्स है रिपोर्ट्स के, कि वहां पे जो भी प्रोमिस किए गए थे, प्लेजेस लिए गए थे, वहां पे कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना कुछ हम अभी तक कर पाए हैं. तो लेट अस टेक अ स्टॉक टेक ऑफ दैट, क्या रिव्यू दैट. सो देख सकते हो कि फाइंडिंग्स जो है 17 की फाइंडिंग्स है इसके, that overall suggests that the world is not on track to achieve Paris Agreement targets, though there was still a rapidly narrowing window for countries to get their act together. ठीक है, तो नो डाउट ओवर द टाइम पीरियड जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज को रिस्ट्रिक्ट करके रखें इस रेंज में 1.5 to 2 डिग्री. समय नहीं है, समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, बट अभी भी 17 की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, की जो भी प्लेजेस हमने किए थे, जो अभी तक अचीव करना चाहिए था, नहीं कर पाए हैं. The 17 headline statement says that the government needs to support ways to transition their economies away from fossil fuel based businesses or economies that states and communities must switch from fossil fuel to renewable. The Delhi Declaration of the G20, of course, for the first time formally recognizes the massive jump in finance necessary for the world to transition to a renewable energy economy. बिल्कुल ठीक बात है कि green and ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रॉम डेवलप अलोंगसाइड द फंड्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें टाइमली मिले. ठीक है, तो बेहद ज़रूरी है कि इसको हम देखते चले और साथ में डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करें डेवलपिंग कंट्रीज को. ठीक है, एंड देन ओनली वी वुड बी एबल टू अचीव दिस टारगेट्स और meet our promises or whatever pledges we have made this Paris Climate Agreement.
सो कितनी फाइनेंस की ज़रूरत होगी वो सब हम आई थिंक 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। अराउंड USD $6 ट्रिलियन हमें 2003 से 33 से पहले पहले चाहिए। यहाँ $4 ट्रिलियन पर ईयर हमें चाहिए फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, क्लीन ग्रीन टेक ट्रांजिशन, फाइन, बाय 2030 इन ऑर्डर टू बिकम द नेट जीरो बाय 2050, जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है। इंडिया हैज़ प्रॉमिस टू बी नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, let us now have a quick look at the miscellaneous facts, figures from what else important from the exam point of view. Okay, so IAF chief takes delivery of first C295 transport aircraft है in Spain. So Spain से हम ये ले रहे हैं. Okay, and of course the company name is Airbus. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. Apart from this, Supreme Court wants manual readied for police on briefing media. ठीक है, जैसे मीडिया ट्रायल करके चल रहा है कि हाँ किसी को कोर्ट बाद में डिक्लेयर करती है कि हाँ वो क्रिमिनल है कि नहीं है, मुजरिम है कि नहीं है, मीडिया वाले पहले ही कह देते हैं कि भाई यही मुजरिम है। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है, तो ज़रूरी है कि उसको भी रेगुलेट किया जाए। ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉज। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स जो भी ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन्स होगी अंडर यूएन ट्रीटी, दैट शुड बी अंडर डोमेस्टिक लॉज। ठीक है, सो दैट कि हमारी जो उसमें जो हमारा उस पर होल्ड है वो बना रहे। दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ऑलरेडी इनेक्ट हो चुका है इन अगस्त, फाइन। तो ये क्या है, दैट इज यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन टू डिस्कस द नेसेसरी चेंजेस। द यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली रिव्यूड द ड्राफ्ट ऑफ द यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा रिलेटेड जो भी एक्सचेंजेस होंगे दैट शुड बी अंडर द डोमेस्टिक एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ DPDP, that is Digital Personal Data Protection Act. Okay. India and Russia has discussed the ways of boosting maritime ties. Okay, what else? Okay, for sickle cell patient and elusive disability certificate, तो इसमें क्या है कि ये सरकार ने प्लान किया था कि जो भी 5 साल से ऊपर के हैं जिनको कि सिकल सेल की प्रॉब्लम, सिकल सेल होती क्या, तो सिकल सेल इज काइंड ऑफ डिसऑर्डर, एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जहाँ पे आपकी रेड ब्लड सेल्स स्टिफ हो जाती है। वहाँ पे सिकल सेल मीन्स सी टाइप की, हमें ऐसे सी जो इंग्लिश वर्ड का सी है ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। सिकल इस तरह की होता है कुछ। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसलिए बोल देते हैं सिकल सेल एनीमिया और सिकल। तो एक प्लान सरकार लेके आई थी टू इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू दोज अबव एज ऑफ 5 विद सिकल सेल डिजीज हैज बीन स्टक इन क्वागमायर एट 3 यूनियन मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे 3 यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, पिछले 3 सालों से ये अभी तक प्लान फाइनल इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन एंड हम सिकल सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक टारगेट रखा है टू एराडिकेट सिकल सेल डिजीज इन इंडिया बाय 2047। एंड सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंस ऑफ दिस डिजीज है अमंग्स द ट्राइबल सेक्शन ऑफ द और ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो ये मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखना व्हाट एग्जैक्टली दिस। ओके, सो प्रेसिडेंट हैज़ फाइनली लॉन्च द आयुष्मान भवा हेल्थ कैंपेन। कल हमने आयुष्मान भवा हेल्थ कैंपेन के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, so this is the news and ये कहा है प्रेसिडेंट ने कि अंडरस्कोरिंग द फिलोसफी ऑफ अंत्योदय। अंत्योदय क्या होता है, विच मीन्स गुड हेल्थ फॉर ऑल एंड लिविंग नो वन बिहाइंड, एंड शी सेड दैट दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड towards achieving universal health coverage and ensuring health care for all as it strives to further consolidate the accessibility and affordability of health services particularly for the underserved। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ने और भी चीज़ें कही, अपलॉड की है। द गोल्स ऑफ आयुष्मान भवा टू फर्दर फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ आयुष्मान कार्ड, जनरेट आभा आईडीज एंड रेज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ स्कीम्स इन डिजीज कंडीशन सच एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ी वाइडर एक अम्ब्रेला है, इसके अंडर काफ़ी चीज़ें कवर होगी इन सब चीज़ों को। एंड फाइनली हाई कोर्ट टू स्टडी प्ली टू रिलीज आंसर की ऑफ UPSC एग्जाम। दिल्ली हाई कोर्ट इसको देखेगा कि क्या UPSC की जो आंसर की है उसको रिलीज किया जाना चाहिए। ओके,
रशिया विल हेल्प यू विद नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट प्लान, ठीक है, दोनों लोग मिले हैं प्रेसिडेंट्स। फ्लड डेथ टोल इन लीबिया, सिटी ऑफ डरना क्रॉसेस 5100। फ्लड से देखो कितनी मौतें हो रही हैं। ओके okay. अर्थ आउटसाइड इट्स सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी ऑन मोस्ट की मेजरमेंट्स। बात है क्लाइमेट चेंज, बड़ी सारी चीज़ें, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट इंडस्ट्री फ्रॉम यूज कार्बन लॉ, ठीक है। सो यू की कार्बन लॉ है, सीबीएम जिसको बोलते हैं, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि कोई भी सपोज इंडिया से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है इन यूरोपियन कंट्रीज, तो चेक किया जाएगा कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी ऐसे सेक्टर में तो नहीं बना जहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, रन करने के लिए फॉर मशीनरी और फॉर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट्स। उस पर सीबीएम के थ्रू कुछ टैक्स लगाने की प्लान किया है यूरोपियन यूनियन ने। बट हमारी सरकार ने, मिनिस्टर ने ये कहा है कि गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट इंडस्ट्री फ्रॉम यूज कार्बन लॉ। तो हो सकता है कुछ सब्सिडी, कुछ इंसेंटिव दिया जाए। So Tesla to source $2 billion in auto parts from Indian firms in 2023. So that's a good news for us. Okay, what else important? So finally land on the sports page. Chalo. So let us have a look at the questions based on our today's discussion. Quick look at the questions, then we'll stop for the day. So here we have the questions. The Global Biofuel Alliance was formed at which of the following summit? A very easy questions. 4 options: BRICS Summit, G20 Summit, East Asia Summit, or SDG Summit. The second is protecting floodplains is the need of the hour. Direct question. You need to comment in 10 mark, for a 10 marker question in 150 words. Fine. So that's it from my side as far as today's analysis is concerned. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow as well. Fine. Thank you.